Hello, bachcho. Let's read the question. And the question is, for a reversible reaction A gives B, the delta H forward reaction. Hello, bachcho. Let's read the question. And the question here is, for a reversible reaction A gives B, the delta H forward reaction is 20 kilojoules per mole. The activation energy of the uncatalyzed forward reaction is 300 kilojoules per mole. When the reaction is catalyzed, keeping the reactant concentration same, the rate of catalyzed forward reaction at 27 degrees Celsius is found to be same that of uncatalyzed reaction at 327 degrees Celsius. Now the activation energy of the catalyzed backward reaction is, so we have to find out the value. Now the option number A is 130, option B is 120, option C is 140 and option D is 180. Now अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो की कॉन्सेप्ट है टू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू occur. And the second is to know about catalysis. Catalysis क्या होती है? The process of increasing the rate of a reaction by adding a catalyst. And the third one is to know about the enthalpy change. Now, this is the heat change associated with the chemical reaction. The fourth, we have to know about the rate of reaction. तो rate of reaction क्या होता है? It is a measure of the speed at which the reactants are converted into products. Now, coming on to the question. सबसे पहले यहाँ पर जो reversible reaction है, that is given like this. So here the delta H forward reaction is given as plus 20 kilojoules per mole. जो activation energy है, that is given as 300 kilojoules per mole, and the rate of catalyzed forward reaction at 27 degrees Celsius is equal to the rate of uncatalyzed forward reaction 327 degree Celsius, and also the reactant concentration
ये सेम है इन बोथ द केसेस। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर Arrhenius इक्वेशन यूज करेंगे टू सॉल्व आवर आंसर। तो यहाँ पर जो Arrhenius इक्वेशन है दैट इज K is equal to AE raised to the power minus EA divided by RT। तो यहाँ पर जो K है that is the rate constant, A is the exponential, EA is the activation energy and R is the gas constant and T is the temperature. Now here अब क्योंकि जो रेट ऑफ कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड दोनों के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं दैट EAE raised to the power EA catalyzed divided by R multiplied by 300 that will be equal to AE raised to the power minus 3 lakh। तो हमने जो 300 किलो जाउल्स को जाउल्स में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट विल बी 3 लाख डिवाइडेड बाय R multiplied by 600। नाउ सिंप्लीफाइंग माइनस EA catalyzed divided by 300 will be equal to minus 3 lakh divided by 600। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी EA catalyzed रिएक्शन की which is 150 किलो जाउल्स पर मोल। नाउ अब हमें पता है कि जो डेल्टा H है दैट विल बी इक्वल टू EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। तो फॉर द catalyzed reaction we will write 20 kilojoules per mole which is the value of delta H that will be equal to 150 kilojoules per mole just हमने अभी सॉल्व किया माइनस EA catalyzed and backward। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर EA catalyzed और बैकवर्ड की वैल्यू आ जाएगी विच इज 130 किलो जाउल्स पर मोल। यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर A। This option is the correct option. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.